Happy and healthy greetings, everyone. I am Dr. Kiran Dilwal. I am an experienced educationist, certified psychologist, motivational speaker, wellness coach, spiritual healer, and a true guide to the humanity. जिंदगी में सारा तमाशा थॉट्स एंड फीलिंग्स का है। नमस्ते भारत, वेलकम बैक टू माय चैनल थॉट्स एंड फीलिंग्स विद दिलवाल किरण। और आज हम बात करेंगे dare to step out of the comfort zone because there is no growth in the comforts. What a beautiful start of the month November for the entire nation. What a historic win at the Women's World Cup. भारत की बेटियां वर्ल्ड कप देश में लेकर आईं और पूरे देश ने जश्न मनाया, चक दे इंडिया। लेकिन जब मैंने उनकी लाइफ हिस्ट्री देखी और उनके जीवन में डिस्कम्फर्ट को जाना, तो वी ऑल गॉट टू नो कि ग्रोथ एंड सक्सेस इज बियॉन्ड द कंफर्ट जोन। हमारी इन बच्चियों ने, हमारी इन बेटियों ने विद द ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन ये प्रूव कर दिया, डिस्पाइट ऑल द ऑड्स ऑफ लाइफ, you can achieve anything. Let's talk about the Blue Jersey girls and their struggles, which was covered behind an armor which they were wearing behind the jersey, जिसको दुनिया ने बिल्कुल नहीं देखा। आइए बात करते हैं। First is the all-rounder Amanjot Kaur. She is the daughter of the carpenter. इनके पास बैग तक बनाने के लिए पैसे नहीं थे। What he did, he carved the bag with the help of the leftover wood. Next girl is Shefali Verma. She is the daughter of jewelry repair worker. Next, Harmanpreet Kaur, the captain. She has broken all the barriers and norms of the society to be in the national squad. Jemima, she is the star better. She was being targeted as the Christian because she was into the reels and all. There was a time जहाँ पर उसको लगा कि मैं इस क्रिकेट को क्विट करके कहीं चली जाऊं, and she was into the anxiety and depression. Next is Deepti Sharma. Her brother came forward. He left his job to support his sister. बात करते हैं रेणुका सिंह ठाकुर की. She has struggled a lot because she lost her father when she was very young. और इनकी मदर एक सरकारी दफ्तर में पियोन की तरह काम करती रही अपने बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए। राधा प्रकाश, इनके फादर मुंबई में एक मिल्क और वेजिटेबल वेंडर हैं। क्रांति गॉड, ओ माय गॉड, शी स्ट्रगल्ड फॉर सिंगल मील बिकॉज ऑफ हर फादर्स स्ट्रगल। और इनकी मदर ने अपने ज्वेलरी तक को गिरवी रख दिया ताकि उनकी बेटी सपने पूरे कर सके। और कौन नहीं जानता उमा छेत्री के बारे में। ओ माय गॉड, शी इज द मैजिकल गर्ल। शी वॉक्ड एवरी डे 16 kilometers to reach her training center, and she is the only girl from the northeast who has been selected in the national squad of the team. इन बच्चियों की जीवन की कहानी ये दर्शाती है कि actual growth happens in the challenging circumstances of the life. We need to understand that growth is the natural part of life, but knowingly, unknowingly, what we do is we restrict our potential by being into the comfort zone. So now, let us understand what is comfort zone. Comfort zone basically एक mental space है। वो space जहाँ पर you don't have to put too much of the efforts. You are familiar with your daily routines and risks are avoided. This zone gives the sense of safety and ease, but it has drawbacks. The drawbacks are it restricts the learning, development, and the self-growth. True progress happens when we step out of the comfort zone, and any big or small achievement goes to the individuals, those who dare to step out of the comfort zone. Here we need to understand that the challenges of life, the discomforts of the life, they are not the barriers, they are not the hindrances. Actually, challenges and the discomforts, they unlock the new abilities. They unlock the potential of the person and helps the person in acquiring the new knowledge and thus builds the life. What all we need in life. जीवन में हमें क्या चाहिए? Success, confidence, skills, wisdom, income and
respect. My dear friends, this is all outside the comfort zone. Nothing is there in the comforts. I'll give you one beautiful example from the nature. Seed is safe in its shell, but to grow, it has to break. आइए अब मैं आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने के फायदे बताती हूँ. When we come out of the comfort zone, तब हमें ना तो किसी तरह का फियर रहता है, ना हमें फेलियर से डर लगता है, ना ही रिजेक्शन से डर लगता है, और अनसर्टेनिटी हमारी दोस्त बन जाती है. कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं हमें लाइफ में स्टैग्नेशन देता है और हमारे पोटेंशियल को लिमिट करता है. बट द मोमेंट व्हेन वी कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, दैट बेसिकली boosts our confidence and builds our personality. In a very general way, I generally talk about this theory. ये मेरी favorite theory है. Biology में class 9th में मैंने पढ़ी थी. The name of the theory is Charles Darwin's theory of evolution. It talks about two concepts. Number one, the struggle for existence, and number two, survival of the fittest, which actually proves कि अगर आप comfort zone में रहेंगे तो आपकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है. ऐसे ही जीवन में इवॉल्व करने के लिए आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल को फेस करना होगा, चैलेंजेस को फेस करना होगा, और तभी आपका सर्वाइवल पॉसिबल है. हियर वी नीड टू रियलाइज that when we step out of the comfort zone, we actually expand our limits and potential and grow intellectually, emotionally and professionally. जीवन में कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं है. ये हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर डिस्कस करते हैं. पहला एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स का, विद्यार्थी जीवन का. इफ द चिल्ड्रन दे स्टे इन द कंफर्ट, they are in the ease, and if they're avoiding the competitions, they're not asking the questions, and they're not practicing proper, then what will happen? There'll be no improvement, there'll be no growth, there'll be no good result, and there'll be no confidence. Similarly, when we talk about the professionals at the workplace, अगर हम सेम टास्क करते रहें, अपने आप को अपग्रेड ना करें और कोई भी नया चैलेंज या रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, तो क्या होगा? There will be no promotion. We will be having no career growth at all. And of course, the organization will not give us the salary hikes too. Similarly, it implies to the athletes also. अगर athlete सुबह उठकर ट्रेनिंग सेंटर टाइम पर नहीं पहुंचेगा, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करेगा, नए टेक्निक्स की ट्रेनिंग नहीं लेगा, then the performance will be zero, of course. So, from today's discussion, we can conclude that the growth and the comfort do not coexist. To scale new heights, one must be willing to leave behind the familiar and step into the unknown. It is only in the discomfort that we evolve, succeed, grow, and unlock our true potential. To grow, learn and thrive, dare to step out of the comfort zone. I hope you liked my video. Please hit the like button, subscribe my channel, and do comment on the favorite part of the video. If you require certain consultation, please do write to me on my email address, which is reflecting on the screen. And do not forget that जिंदगी में सारा का सारा तमाशा thoughts and feelings का है. So align your thoughts and feelings. Thank you so much.